Hello everyone, this is Mohsin Khan and I am here to teach you class 10th mathematics, and the chapter is pair of linear equation in two variables. This is our chapter number 3, and according to this chapter I am going to teach you all the concepts and all the theories related to this chapter. As the name of this chapter suggests, pair of linear equation in two variables, it means there will be two equations and the power of these equations will be 1 and it will be in two variables. So first of all we have to write the general equations for these equations. तो जनरल इक्वेशन इस तरीके से होती हैं कुछ. पहली जनरल इक्वेशन आएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Here there are two equations and these two equations will represent two lines, and the lines may be number 1, intersecting lines. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन होगी, कंडीशन अगर आपसे बोलेगा कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके लिए कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, एंड द इंटरसेक्टिंग लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड एज, एंड देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन, देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेंगे. इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन है ये a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, या ये रिप्रेजेंट करेंगी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंस लाइंस मीन्स द लाइंस विच आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, जो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन. And the condition for coincident lines is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Means we have to compare the ratios of these equations. If there is such a condition, then these lines will represent coincident lines, and for coincident line there are many infinite solutions. Clear? And third one, they will represent parallel lines. Parallel lines means such type of lines, and the condition for parallel line is such that condition a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन. इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. अब मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ. चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इट मीन्स देयर विल बी टू इक्वेशन एंड देयर विल बी टू वेरिएबल्स एंड द पावर ऑफ दीज वेरिएबल्स विल बी 1. लीनियर मीन्स पावर 1. देयर आर टू इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, and these two equations will represent two lines which may be intersecting lines, coincident lines or parallel lines. The condition for coincident lines is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, and for intersecting line there will be only one solution. For coincident lines there will be many infinite solutions, that these the lines will coincident with to each other. It means the condition for coincident lines is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, and they may represent parallel lines. Parallel lines means which do not intersect each other. Condition for parallel line is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Clear? So now I am going to teach you how to solve these equations, how to solve linear equation in two variables. So there are certain methods
of solving linear equations in two variables. Linear equations in two variables. So there are three methods. Number one, substitution method. Substitution method. Number two, elimination method. Elimination method. And number three, cross multiplication method. So we can use any of these methods to solve the linear equations in two variables. So substitution method, elimination method and cross multiplication method. According to CBSE, this method is deleted. So we are going to study substitution method and elimination method. तो इन मेथड्स के हेल्प से हम सॉल्यूशन ये इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे.